morning dear students, welcome back to our today's class. Yesterday we had completed the exercise K and L. Okay, so today we will see the exercise M. See, K, L, M, these all three exercises is full depends upon the abstract noun. Already we have seen what is the abstract noun. We had completed what is the definition of the abstract noun, what is the what are the examples of the abstract noun. So today we will see the exercise M on the full basis on abstract noun. Okay, so on the blackboard I am just writing down the answers. In the M exercise there are 15 questions. मीन्स वर्ड्स दिए गए हैं वहां पे, फिर 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so see the M exercises fill in the blanks with the opposite of given abstract noun. The words in the box will help you. What they have given to us? उन्होंने बोला है कि there are the abstract nouns. Okay, so fill in the blank with the opposite given to the abstract noun. See, they have given to us a 15 abstract noun. And we have to जो भी abstract noun है we have to change into the opposite verb. मतलब अगर वहाँ पे see I'm just giving the example, जैसे go दिया है तो obviously अगर abstract noun का होगा but it's not, तो go का हम जैसे कम करते हैं तो उसी प्रकार से जो भी abstract noun में words आते हैं we have to put into the convert in a opposite verbs. Okay, see here is the in the box there is a help box. मतलब उसी के ही जो भी those which are given us to abstract nouns examples वहाँ पे हमको help box में भी दिए गए हैं. वहाँ से हमको we have to write the correct one and we should write it down a correct one answers. Okay, so first दिया है it is a firstly we will see what is the help box in that. Injustice, sadness, ugliness, weakness, falsehood, cowardice, rudeness, hate, guilt, dishonesty, meanness, cruelty, failure, enmity and impatience. Okay, so first है politeness. So do you know what is the meaning of politeness? Politeness हम बहुत ही नम्र बोलते हैं और उसी का opposite क्या होगा कि वो बहुत ही एकदम rudely बात कर रहे हैं. So we will see the word if the word has given polite का अगर rudeness होगा तो we have to already they have written on the answers. Okay, polite का already उन्होंने rudeness दिया है. So let's move the second love. हम किसी से प्यार करते तो प्यार का obviously it's a नफरत के लिए हम generally the word we can use the word it's a hate. So love का क्या आएगा second में it's a hate. Okay, understood? Politeness को already they have given to us answer. So hate love का क्या आएगा hate. Third है it's a innocence. बहुत ही innocent एकदम innocence गर्ल जैसे बोलते हैं नम्रता तो उसका ही क्या होगा guilt. G-U-I-L-T. थर्ड का क्या है guilt. G-U-I-L-T है ना. प्रामाणिक जैसे बोलते हैं innocent बहुत ही ज्यादा प्रामाणिक और guilt मन में कोई खटास गिल्ट होना है शर्मिंदगी महसूस लाइक दिस. ऑनेस्टी मतलब हम क्या बोलते हैं ओ ही इज वेरी ऑनेस्टी बहुत ही प्रामाणिक है वो. तो प्रामाणिक ऑनेस्टी का डिसऑनेस्टी अप्रामाणिक तो ऑब्वियसली ऑनेस्टी का क्या आएगा डिसऑनेस्ट. Dishonesty, D-I
SHONESTY, dishonesty. जेनरोसिटी, जेनरोसिटी मतलब क्या होता है एकदम, जेनरोसिटी का क्या आएगा? टेल मी व्हाट इज द वर्ड ऑफ द जेनरोसिटी? इज द रूट, एक सेकेंड, जेनरोसिटी का क्या आएगा बताओ, बताओ जेनरोसिटी का क्या आएगा? इट्स अ क्रूएलिटी, दुष्ट, है ना? सो इसका CRUELTY, जेनरोसिटी का क्या आएगा? इट्स अ क्रूएलिटी. देन काइंडनेस, दयालु, और हम जो अनदयालु को क्या बोलते हैं? मीननेस. मीन मतलब मीनफुल, मतलबी. दयालु को हम क्या बोलते हैं? मीननेस, मतलब मीननेस मतलब बहुत ही ज्यादा मतलबी. ओके, देन हैप्पीनेस, ऑब्वियसली इफ द पर्सन हु हैज हैप्पी, it's a opposite word, it's a sad, obviously it's a sadness, it's a sadness. Next, justice मतलब हम किसी को न्याय दे रहे हैं. So justice तो obviously अन्याय, so injustice. सिर्फ हमको इन लगाना है वहां पे, JUST. Injustice. Okay, so next is a bravery. Bravery means एकदम धाड़स. The soldiers are brave, है ना? bravery. The bravery मतलब शूर, और cowardice मतलब क्या है? डरपोक, है ना? cowardice. ब्रेवरी मीन्स क्या होता है? शूर. और cowardice मीन्स क्या होता है? इट्स अ, क्या बोला है बताओ जल्दी, अभी जस्ट बोला था, COWARDISE, डर, है ना? मतलब भयभीत. डर एक प्रकार का. ओके, पेशेंस. पेशेंस वहां पे दिया ही हमको आंसर में, इनपेशेंस. क्या दिया है हमको? इनपेशेंस. INPATIENCE, impatience. Okay, we have to put only I am, impatience. Next दिया है truth, सच्चाई. तो हम क्या बोलते हैं? सच और झूठ. तो true and false. So truth का आएगा वहां पे, it's a falsehood. falsehood. Understood? आ रहा है आपको समझ में? Okay. What's the 11? Okay, 8. It's a 9. It's a 10. It's a 10. So 12th one is a strange. Strength मतलब क्या होता है? शक्ति. तो शक्ति का हम क्या बोलते हैं? उसका weakness. The answer is strength का, it's a weakness. WEAKNESS, weakness. Then obviously it's a beauty. The beauty means सुंदरता. तो उसका हम क्या बोलते हैं? It's ugly, क्रूप. तो क्या आएगा इसमें? Already we have given the answer, ugliness. ugliness हम बोलते हैं क्रूप, मतलब who has not looks good. Okay, ugly. Then सक्सेस. सक्सेस मीन्स क्या होता है? सक्सेस, अचीव, हम कोई प्राप्त करते हैं, विजय. सक्सेस का तो क्या है? इट्स अ फेल्यूर. इट्स अ फेल्यूर. ओके, अंडरस्टूड? उसका है फेल्यूर.
The next is a friendship. हम किसी के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, मित्रता करते हैं, तो वही मित्रता. What is the opposite one? It's a enmity, means दुश्मन. Enmity. आ गया? It's a enmity. See once again, I will revise all the 15 exercise. Okay, all the 15 questions. First है polite का rudeness. Okay, first का क्या है? Polite का already they have given two answers. First का उन्होंने दिया है rudeness. उसके बाद है, you just look at on blackboard, I am just reading out. Okay, then politeness, rudeness, love का उन्होंने दिया है hate, innocent obviously it's guilty, honesty means प्रामाणिक, it's a dishonesty, generosity का है rudeness, kindness meaningless, happiness obviously it is a sadness, justice न्याय it's a injustice, bravery धाड़स, उसका क्या है वो कोवर्डिस, यहाँ हम उसको स्पेल आउट कर सकते, प्रोनाउंस करते हैं कोवर्डाइज मीन्स भयभीत, डरपोक बोलते हैं उसको. पेशेंस, इम्पेशेंस, पेशेंस में से बोलते हैं बहुत ही पेशेंस रखना, धीर रखना. ट्रुथ, सच का झूठ, इट्स अ फॉल्सहुड. देन स्ट्रेंथ, इट्स अ शक्ति है ना, पावर. देन वीकनेस. देन अगली, it's a beauty का it's a ugliness. Then success obviously the answer is failure. Then friendship it's a enmity means दुश्मन, जो भी हमारा शत्रु रहता है. So here we have completed the exercise in the on basis of the abstract noun. See, all these are we have to complete it. First of all we learn what they have asked to us. What was the questions? Question क्या था? Question what is the question right now? Question क्या है ना? जो भी exercise हमको दी है, what was the base and क्या था वो base है ना, कि जो भी बेस के आधार पे we have to solve the exercise. That's why we know about the base. अभी इसका बेस क्या था? It is a abstract noun. So here we completed the 5 nouns, 5 the kinds of noun. It is the types of the noun है ना. So again I will revise. First the proper, second is, one second. What is the first one? It's a proper noun, then it's common noun, third is collective nouns, and fourth one is material, and now it's a abstract noun. So they all are we had completed on the basis of these all nouns. Okay, so here also we had completed our list, chapter number 3, nouns and kinds of nouns. So we will see tomorrow the new chapter. It's not a grammar portion, it's a course book. We will see the what is that, मतलब वहाँ पे क्या है, poem है कि lesson है, we will see in the next chapter. So please you have to write with the good handwriting, with the speak. You have to good pronunciation, मतलब आपको अच्छे से लिखना है with the dark. Oh yes, in the fifth class you don't have a write in a pencil. Yes, so please एक बार हम पेन से लिखने के बाद we do not erase, हम erase नहीं कर पाते, तो आप पहले से ही you have to write the correct one. See, if I had a mistake, कभी अगर मेरी कुछ मिस्टेक होती है, जैसे I will see. See what was my mistake. So in the subject and predicate chapter 2 we will see in the page number 5, add suitable and predicates. I did not write the helping words. When I realized, I just correct out
don't worry, I will click the picture correctly and send it to, it's our 5th class group. Okay, so जो भी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में चैप्टर 2 का है वहां पे हमको मतलब हमने किए तो है वहां पे, बट आई जस्ट फॉरगॉट द हेल्पिंग वर्ड, ओनली द स्मॉल मिस्टेक लाइक R is only. Okay, so I will correct it and I will send it to in our groups. Okay, so otherwise we will see the chapter. We will see the chapter in next period. Okay, so till then take care and we will see tomorrow. See you.